Hello students, welcome back to MKH video series. My name is Aditya and in the previous video we have successfully completed exercise 10.5 of circles up to question number 3rd. Right now let me just move further from that point. So we will discuss this video from question number, you can see 4th, right? But let me just before moving on to questions tell you that you have to just simply understand the theorems and how to actually apply them on the questions. So मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ that if you just know the theorems exactly the way they are and how to actually apply them on the questions, then there is nothing in this chapter which is hard, right? So यहाँ पे आपको बस theorems के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए that how they usually work. So यहाँ पे मैं आपको यही explain करने वाला हूँ that how we will further use theorems in this exercise on the remaining questions, right? So do revise all the theorems before you can see doing the questions in this exercise, right? So let us move on to now question number 4th. So यहाँ पे इस question के अंदर आपके सामने ये diagram given है, you can see a figure in which angle ABC is 69 degrees. So आप ध्यान से देखिए, let me just mark angle ABC. So ABC, that means this complete angle, right? ABC is 69 degree. Then angle ACB is also given as 31 degrees. So let me just mark that. So ACB, that means this angle, right? So ये भी हमें given है, that is 31 degrees. Now we have to find angle BDC. So यहाँ पे मैं mark कर देता हूँ angle BDC. That means this is the angle we have to find out in this question. So सबसे पहले मैं solution में लिख देता हूँ that we have to find out angle BDC, right? So starting off this question here, so सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक theorem जो लगेगी यहाँ पे वो बता देता हूँ, theorem 10.9. So let me first write that theorem here. So by theorem 10.9 we know that angles in the same segment are equal, right? Let me just correct that, right? So ये theorem हम कैसे इस diagram के ऊपर apply कर रहे हैं, ध्यान से देखिए. आप देख सकते हैं ये BC एक कोड है, right? So यानी कि इसके नीचे वाला भी ये सेगमेंट हो गया और ये भी क्या हो गया, एक सेगमेंट हो गया. अब आप देख सकते हैं BC कोड के ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी ये दोनों पॉइंट्स A और D सेम सेगमेंट में है, राइट? यानी कि अलग अलग सेगमेंट्स में नहीं है, दे आर इन द सेम सेगमेंट. दैट मींस ये जो कोड है वो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो एंगल बनाएगी जो कि सेम सेगमेंट्स में है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट? सो दिस इज द थ्योरम व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर इन दिस क्वेश्चन, राइट? सो सबसे पहले तो आपको यू कैन सी ये देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि कौन सी थ्योरम एप्लीकेबल है, राइट, according to the figure. But now let me just tell you before actually applying this theorem. Now सबसे पहली चीज जो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूं, you can see according to this question हमें ये theorem के हिसाब से पता चल गया that angle BAD जो है वो BDC के इक्वल होगा, right? So angle BAD is going to be equal to angle BDC, right? So ये तो मैं दे देता हूं इसको first equation according to this theorem, right? अब बात करते हैं, you can see triangle ABC की. So in triangle ABC we have, so हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. We have also seen in the previous question here. So by angle sum property we know that the sum of all the angles of a triangle is 180 degrees, right? So you can see by angle sum property you can see angle, you can see, let me just name them. So angle ABC plus angle BCA plus angle BAC, or you can say CAB, whatever you call it, is equal to 180 degrees. So आप देख सकते हैं angle BC and A यानी तीनों एंगल्स जो हैं ट्राइंगल ABC के उनका सम क्या होगा, 180 degrees. Now let me just check out. So यहाँ पे एंगल ABC हमें given है, you can see in the question here, that is
69 degrees, right? Then talking about, you can see angle BCA or you can say ACB, whatever you call it. So ये सेम है, आप देख सकते हैं सेंटर वाला जो लेटर होता है एक्चुअल में उसी के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा था, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल C31 है, तो दैट मींस एंगल BCA कितना गिवन है हमें, यू कैन सी हियर BCA कितना है 31, राइट? प्लस यू कैन सी BAC, सो ये हमें नहीं पता, सो लेट मी जस्ट कीप इट एज इट इज। अब आप देख सकते हैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा आपके पास 9 + 1 दैट इज 10, देन 6 + 4 दैट इज आल्सो 10, सो 69 + 31 हमारे पास कितना आ गया 100, let me just correct that, plus angle BAC is equal to 180 degree। अब यहाँ पे ये 100 जो है वो राइट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा, so that will give us, you can see angle BAC as 180 degree minus 100, so ये प्लस का 100 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 100, so 180 minus 100 that will be 80 degrees, so angle BAC is, you can see 80 degrees here, so हमें ये पता चल गया ये एंगल कितना है 80 डिग्री का। नाउ लुक एट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें यहाँ पे पता है कि ये जो BAC है, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट, आप देख सकते हैं यहाँ पे BAC था ये एंगल, राइट? आई हैव जस्ट मेड अ लिटिल एरर, सो आई एम जस्ट करेक्टिंग इट हियर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे BAC एंगल जो है वो BDC एंगल के इक्वल है, सो हमें यहाँ पे BAC एंगल पता चल गया कितना है, सो दिस इंप्लाइज, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें पता है दैट एंगल BDC जो है वो किसके इक्वल है BAC के, which we now know is 80 degrees, so this implies angle BDC भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। आप देख सकते हैं अगर सेम सेगमेंट में पॉइंट्स बन रहे हो ऑन द सर्कल, देन द कोड मेक इक्वल एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट, यानी कि अगर ये 80 है तो वो भी कितना हो जाएगा 80 degrees, right? So you can see with the help of, you can see theorem 10.9, we have actually acquired angle BDC in the question which was missing, right? So you can see here, simply by the help of the theorem, we have obtained the answer to the solution, right? So you can see this is how you have to solve such type of questions. So students, let us move on to the next question now. So you can see next question is question number 5th, in which it is given that, you can see in this given figure, A, B, C and D are 4 points on a circle। आप देख सकते हैं यहाँ पे A, B, C और D, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, you can see here। Then you can see AC and BD, let me just tell you, यहाँ पे अगर मैं AC को ज्वाइन करता हूं, so ये AC एक कोड का काम करेगी, and you can see joining BD that will also work as a code। so यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कोड है AC और BD। हमें पता है कि अगर कोई दो पॉइंट्स सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं किसी सर्कल के, देन बाय जॉइनिंग देम वी गेट अ कोड, राइट? सो यहाँ पे AC और BD दोनों कोड्स जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज E हियर, राइट? यू कैन सी सच दैट एंगल BEC इज इक्वल टू 130 डिग्री। सो इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों कोड्स, सच दैट एंगल BEC जो है वो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 130 डिग्री, राइट? सो दैट इज गिवन हियर। सो लेट मी फर्स्ट राइट डाउन इन द सॉल्यूशन द गिवन थिंग। So given thing is, you can see angle BEC जो है वो कितना है 130 degree, and also angle ECD is also given, ECD, that means this angle, right? That is 20. So let me just write that also in the given thing, that it is 20 degree. Now let me just write down to find here. So हमें यहाँ पे कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BAC। So let me just mark that. So BAC, that means this angle, right? So हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। So how we will actually find this, right? So again, let me just use theorem 10.9, which says that angles in the same segment are equal. So आप देख सकते हैं ये BC एक कोड का काम कर रही है। So इसके ऊपर वाले सेगमेंट में आप देख सकते हैं सेम सेगमेंट में दो पॉइंट्स आ रहे हैं A and D on the circle. So ये BC कोड जो है इनके ऊपर इक्वल एंगल जनरेट करेगी, यानी कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू द लेआउट हाउ टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन, राइट? सो यानी कि अगर हमें आप देख सकते हैं ये वाला एंगल पता चल जाए, दैट मींस ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा बाय थ्योरम 10.9, दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो नाउ आवर मोटो इज टू फाइंड दिस एंगल, राइट? सो हाउ वी विल एक्चुअली फाइंड दिस एंगल, आप देख सकते हैं अगर मैं ये वाला ECD ट्रायंगल अलग से बनाऊं, सो लेट मी जस्ट शो यू हियर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये C है, ये D है और ये E है, राइट? सो ये वाला ट्रायंगल मैं यहां अलग से बना रहा हूं। आप देख सकते हैं
अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, सो दैट विल बी इक्वल टू एंगल BAC, देन आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। सो ये एंगल कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं ये एंगल कितना है 20, यानी कि अगर ये वाला एंगल पता चल जाए, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये पता है कि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 ऑफ अ ट्रायंगल। सो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, देन वी विल गेट दिस एंगल। सो फाइनली वी विल गेट दिस आल्सो, राइट। सो अब बात आती है हम ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे। इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये B तक एक्सटेंड है। अब आप देख सकते हैं ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। सो यहाँ पे मैं अलग से दिखा रहा हूं आपको, यानी कि ये टोटल एंगल कितने का है 180 डिग्री, राइट। ये पूरा कंप्लीट एंगल। ऑल्सो अगर आप ध्यान से देखें तो इतना एंगल कितना गिवन है हमें 130 डिग्री, राइट। यानी कि इतना एंगल 130 है और कंप्लीट एंगल कितना है 180, राइट। सो यानी कि अगर मैं यहां पे आप देख सकते हैं पूरे एंगल में से ये 130 माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स दैट दिस BD इज अ स्ट्रेट लाइन। सो हमें यहां पे पहले लिख देता हूं, फाइंड आउट क्या करना था BAC। सो स्टार्टिंग माय प्रूफ हियर, सो यू कैन सी नो दैट BD is a straight, let me just correct the spell here, straight line. So you can see angle BEC plus angle CED will be equal to 180. They are the linear pair. आपको मैं बता देता हूं, अगर स्ट्रेट लाइन होती है उसका एंगल 180 होता है, उसके ऊपर अगर एक रे खड़ी होती है, सो दैट रे एक्चुअली डिवाइड्स द एंगल इन टू पार्ट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये E था, ये B था और ये D था, देन दिस C। सो EC इज अ रे स्टैंडिंग ऑन BD। सो यानी कि ये टोटल एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। अब दोनों साथ साथ वाले एंगल्स हैं, यानी जो दो साथ साथ वाले एंगल्स का सम 180 होता है, हमें पता है दैट इज अ लीनियर पेयर, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे BEC जो है वो पता है दैट इज 130, राइट, प्लस एंगल CED इज 180। अब आप देख सकते हैं 130 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, सो एंगल CED विल बी 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्रीज, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास यू कैन सी एंगल CED आ गया, दैट इज 50 डिग्रीज। सो लेट मी जस्ट मार्क इट हियर। सो यानी ये एंगल कितना हो गया 50। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, मैंने आपको बताया था कि ये पता चल जाने के बाद हम यहाँ पे इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, दैट इज द सम ऑफ all the angles of a triangle is 180 degree, right? So let me just first make some space above. Now in triangle you can see ECD, let me just write correct here, by angle sum property we have, you can see angle CED plus angle ECD plus angle EDC is equal to 180। आप देख सकते हैं EC और D, यहाँ पे तीन एंगल्स हैं EC और D। You can see the middle letter here, so ये तीनों एंगल्स का सम क्या हो गया 180। so आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल E जो है that is given to us, we have found out here, you can see angle E that is 50 प्लस एंगल C, आप देख सकते हैं ये हमने भी ये भी निकाल लिया था, दैट इज 20 गिवन था ये, सॉरी, राइट। सो दैट एंगल वाज गिवन एंड दैट इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट हियर, राइट। देन यू कैन सी एंगल EDC इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज इक्वल टू 180। सो आप देख सकते हैं इनका सम कितना हो गया 70 प्लस एंगल EDC इज इक्वल टू 180। अब आप देख सकते हैं ये 70 उधर तक क्या होगा माइनस, सो दिस विल गिव अस एंगल EDC एज 180 माइनस 70, that is 110 degrees, right? so हमारे पास एंगल EDC कितना आ गया 110। so आप देख सकते हैं EDC बोल लीजिए या BDC बोल लीजिए, बात तो एक ही है क्योंकि D लेटर के ऊपर ही बन रहा है, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज BDC इज इक्वल टू 110 डिग्रीज, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास एंगल BDC पता चल गया। नाउ हमें पता है दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो अगर ये वाला एंगल 80 है, दैट मींस ये भी कितना होगा 80, because they are in the same segment, right? So let me just tell you first, now we know by theorem 10.9 that
angles in the same segment are equal, right? So जैसे कि हमें थ्योरम 10.9 से पता है दैट सेम सेगमेंट में एंगल्स इक्वल होते हैं, दैट मींस एंगल बी ए सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी सी के. सो यू कैन सी एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी डी सी. नाउ हमें पता है बी डी सी कितना है, 110. So this implies angle BAC will be also 110 degrees, right? So you can see I have written 80 here. Let me just correct that. Right. So here you can see we have came to the conclusion that angle BAC is 110 degrees, right? So you can see just by simply applying on the theorem here, and before that just a normal, you can see equations formation, you can see we have reached to the angle required in the question, right? So this is how you have to solve such type of questions here. So students, let us move on to the next question now. So you can see question number 6 here is that ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E, right? Now let me just tell you कि ये इस question के अंदर हमें diagram given नहीं है, that means we ourselves have to draw the diagram here, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक diagram बनाया एक circle का, then I have taken A, B, C and D 4 points on the circumference, right? And then joined them, you can see A, B, C, D. Then I have got a figure, you can see a cyclic quadrilateral, क्योंकि हमें पता है कि अगर चारों points जो है वो circle की circumference पे lie करते हैं, then that quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. So ये ABCD एक cyclic quadrilateral मैंने draw कर लिया as it is given here. Now you can see मैंने यहाँ पे diagonal join किए, A और C point को join किया तो मुझे क्या मिला, diagonal AC, and B और D points को join किया तो मुझे मिला diagonal BD. Now ये दोनों diagonals एक दूसरे को E point पे intersect कर रहे थे, that was given. So मैंने यहाँ पे इन दोनों को E points पे intersect किया. Then you can see यहाँ पे हमें question में angle DBC given है. So I have marked here, you can see angle DBC. यानी this angle is given to us as 70. Then also angle BAC जो है वो कितना है, 30 degree. So let me just mark that. So BAC, that means this angle is 30. Now we have to find out angle BCD. BCD यानी कि this complete angle, right? So now you can see सबसे पहला step तो हमें यही करना है that हमें angle BCD find out करना है. Then we will move on further later. So यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ तक question को solve कर लेते हैं. So the solution is, first let me just write the given thing. So यहाँ पे हमें पता है that ABCD is a cyclic quadrilateral. I'm just writing the short form of quadrilateral, that is quad. Now you can see here, you can also see also the diagonals intersect at point E. Now you can see angle DBC is also given here, that is 70 degree. Angle BAC is given, that is 30 degree. Now let me just write down to find, right? So हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एंगल BCD. फर्दर ये एंगल फाइंड आउट करने के बाद हमें एंगल ECD भी फाइंड आउट करना है. नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. सो ECD, दैट मींस दिस एंगल अलोन, राइट? सो दिस पार्ट, राइट? सो ये भी हमें फाइंड आउट करना है फर्दर. सो लेट मी जस्ट राइट दैट आल्सो, ECD. नाउ यहाँ पे एक चीज और गिवन है मुझे, दैट दिस AB साइड इज इक्वल टू BC. So let me just write that thing in the given also. So here you can see, let me just write it here. So also AB is equal to BC. So यहाँ पे मैंने given और to find लिख लिया है. Now let me just start off the solution here. So यहाँ पे सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूँ. Again थ्योरम 10.9 which says angles in the same segment are equal, right? सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए ये BC कोड जो है, सो आप देख सकते हैं इसके सेम ऊपर वाले सेगमेंट में दो पॉइंट्स हैं A और D. यानी ये जो BC कोड है A और D पे सेम एंगल बनाएगी. सो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30. सो लेट मी फर्स्ट राइट दैट. सो वी नो फ्रॉम थ्योरम 10.9 that angles in the same segment
आर इक्वल, राइट। सो यू कैन सी अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से, दैट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BDC, सो दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 30, बिकॉज हमें ये एंगल 30 पता था, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एंगल BDC विल बी 30 डिग्री, राइट। सो पहले तो हमने BDC फाइंड आउट कर लिया, अब यहां पे हमें एक्चुअल में फाइंड कौन सा एंगल करना है, BCD, यानी दिस कंप्लीट एंगल, राइट। सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ वी विल नाउ फाइंड आउट दिस एंगल विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे BCD ट्रायंगल की बात करूं मैं यहाँ पे, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट इन अ रफ एरिया हियर लाइक दिस। सो मैंने यहाँ पे अलग से ये ट्रायंगल BCD ड्रॉ कर लिया, यू कैन सी। अब यहाँ पे मुझे पता है एंगल D कितना है, अभी हमने निकाला, दैट इज 30। देन ये एंगल B, जो एंगल DBC है, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में, दैट इज 70। अब बात आती है एंगल BCD जो हमें निकालना है। सो क्लियरली यू कैन सी हियर वी कैन अप्लाई द एंगल सम प्रॉपर्टी ओवर टू दिस ट्रायंगल, क्योंकि हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देन 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल गिव अस दिस एंगल BCD। So this is what we have to find out in this question. So first let me just make some space above. Now in triangle BCD we have by angle sum property. तो हमारे पास पता है that angle BCD प्लस एंगल CBDC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 180। आप देख सकते हैं, सिर्फ सेंटर वाला लेटर देखिए आप, B, C और D, यानी ये तीनों एंगल्स B, C और D, तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180, राइट। सो आप देख सकते हैं एंगल C जो है हमारे पास, ये कंप्लीट, ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। सो दिस विल बी एज इट इज। देन एंगल D हियर यू कैन सी this angle D is 30 degree plus angle DBC, or you can see angle B, that is 70, equal to 180. Now you can see 70 plus 30, that is 100, and BCD will be as it is, equal to 180. Now let me just make some space below. So this implies angle BCD will be, अब 100 उधर माइनस में जाएगा, so you can see plus 100 will become minus 100, so 180 minus 100 that will be 80 degrees, right? So यहाँ पे हमारे पास एंगल BCD फाइंड आउट कर लिया हमने, you can see here which we require. So ये एंगल कितने का आ गया हमारे पास, 80 degrees का, right? Now the next thing is we have to find out angle ECD, right? So अब बात आती है कि हम ये एंगल ECD कैसे फाइंड आउट करेंगे, right? So let me just first make some space below. So now let us now look at angle, you can see ECD, what we have to find out, right? So यहाँ पे हमने ये BCD, ये complete angle तो find out कर लिया, that is 80 degree, right? So how we will now find out this angle? Let me just tell you. सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बताऊं आपको, हमें क्वेश्चन में गिवन है that this side AB is equal to BC. Now आप देख सकते हैं ये जो दोनों साइड्स हैं ABC ट्रायंगल की हैं, right? So now let me just take triangle ABC. So in triangle ABC we have AB is equal to BC. So हमें यहाँ पे पता है इस ट्रायंगल ABC के अंदर, so let me just rub this and draw triangle ABC first, right? So अगर आप ध्यान से देखें, अलग से मैं यहाँ पे अगर ABC ट्रायंगल बनाऊं, so this is A, B and C, right? अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एंगल कितना है, 30, और ये AB साइड BC के इक्वल है। सो हमें पता है कि ट्रायंगल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, राइट? सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट? सो लेट मी जस्ट राइट दैट दिस इंप्लाइज एंगल, you can see BAC will be equal to BCA equal to 30 degree, right? So हमारे पास ये एंगल C आ गया, that is 30. So let me just tell you that this angle BCA, so this angle will be now 30, right? और ये complete angle हमें पता ही था कितना है, 80 का. So अगर मैं इस complete angle में से ये 30 माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा ना, 80 में से 30 माइनस करूंगा, that will be 50. So this is how we are going to find out further. But let me first complete this thing. So ये reason क्या होगा इसका?
यू कैन सी दोनों एंगल्स इक्वल हो गए क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल थी. सो दैट मीन्स द रीजन इज एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal, right? So this is the reason behind the equality of these two angles, right? So यहाँ पे ये 30 आ गया, आप देख सकते हैं ये 30 हो गया. पूरा कितना मैंने फाइंड आउट किया था, अभी जस्ट फाइंड आउट किया, दैट इज 80. आप देख सकते हैं एंगल BCD कितना है टोटल 80 और BCA जो है मैंने अभी फाइंड आउट किया, दैट इज 30. सो अगर मैं पूरे एंगल में से ये 30 माइनस कर दूं तो रिमेनिंग एंगल ECD मेरे पास आ जाएगा. सो नाउ angle ECD which we have to find out will be, you can see, angle BCD minus angle BCA, right? आप देख सकते हैं BCD में से अगर मैं BCA माइनस कर दूं तो मेरे पास ECD आ जाएगा, और you can say ACD, whatever you call it. So you can see अब यहाँ पे BCD एंगल मैंने पीछे फाइंड आउट किया, that is 80 minus BCA. So आप देख सकते हैं BCA कितना है यहाँ पे हमारे पास 30. So 80 minus 30, that is 50 degrees, right? So this implies angle ECD, what we have to find out is 50 degrees, right? So ये angle कितना आ गया 50 degree का, and this is what we have to find out in this question here. So you can see by simply looking at the steps that I have taken to find out this angle and also the use of the theorem and the property of a triangle, we reached to the angle ECD here. So here in this question, first we have to find out angle BCD, then angle ECD. So this is how we have to find out angles you can see missing in the question, right? So that was all in this question here.